it is as per your expectations. So at the outset, I extend my thanks to the Director HRDC, BPSMV, and Dr. Bhupendra Singh, course coordinator of this program, for giving me this opportunity to interact with you on a very important issue, which is plagiarism. And as you know, it is always a matter of privilege and pride to interact with young teachers of higher education institutions. So today I'm with you for a small interaction on the topic academic integrity and plagiarism. As we all are faculty members and we usually publish articles, research papers, we write theses, dissertations, we also guide our scholars for their PhD work, and so forth. So academic integrity and plagiarism has become a very important issue in academia. So I'll be touching a few aspects of plagiarism and also discuss with you recent UGC guidelines issued by the University Grant Commission for curtailing the plagiarism in the academia. So let me present my slide. Yes. I hope my slides are visible to you. Yes, sir. Is there any need to like put it on slideshow, or this size is okay? Just confirm. Let me just. Kindly enlarge those slides. It is too small. It is too small. Okay, let me put it on slideshow mode. Yeah. So I hope now slide size is okay with you. Yes, sir. It's okay. Yes, okay. Sir. And voice also. Yes, sir. Yes. Because in between I may not be like able to confirm whether my voice is audible to you or not. So if you have any problem, you can like deliver a message or something like that, right? So as I told you, today I am with you to interact with you on a very important issue in like modern academic world. It is academic integrity and plagiarism. And as I said, in between that, we are faculty members and we are supposed to like write research papers, publish research papers, articles, and other academic documents. So whenever we are writing any academic document or we are guiding our research scholars or students, it is expected from you, from us, that we follow some guidelines framed by the UGC so that our academic document is at par with the regulations of UGC. So let me just I'll be touching throughout my presentation. First of all, I will introduce to you what basically plagiarism is, and I'll also give you some examples like what kind of plagiarism we usually find in academic documents. And then we will try to learn certain plagiarism detection tools. There are certain commercial softwares and also certain open source and free softwares which we can use to detect plagiarism in our academic documents. And as I said, we'll be also discussing UGC guidelines regarding plagiarism. And I will also like try to find some time to do certain hands-on exercise on certain software to detect, excuse me, there is an important call, excuse me. Hello. Yes. ये इसमें है जो 2/4 है, जो बड़े वाले क्वार्टर है ना पीछे, वहां चले जाइएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर, हाँ जी 2/4 किसी पूछना, मैं भी बिजी हूँ ना लेक्चर में, ठीक है।
Sorry for the interruption. So these are the contents basically which are the part and parcel of my presentation, and these things I'll be discussing with you in the coming like time frame. So first of all, we like all, as I said, we all are faculty members, so we should be very clear about the meaning of academic integrity. So for a layman, academic integrity is the moral code or ethical policy of academia. So whenever we write something, whenever we publish something, whenever like we are following some moral code of conduct or ethical policy, it is like somehow known as academic integrity. And when we look at the UGC regulations, part 3, which came in like July 2018, as per those regulations, academic integrity is the intellectual honesty in proposing, performing, and reporting any activity which leads to the creation of intellectual property. So when we are honest, when like creating or proposing or performing some academic or intellectual property, it is known as academic integrity. And there is immense importance in academia of this academic integrity. Let me just proceed with the next slide. Excuse me. Yes. Then the second important thing that I would like to discuss with you is that what is plagiarism? As I said that in academia, that this issue is very talk of the town, and people are bothering about plagiarism because the use of internet has like increased heavily. We are heavily dependent on internet nowadays, and through the like increased use of internet, plagiarism has also increased. So let me just clearly define it, what basically plagiarism is. According to Merriam-Webster online dictionary, plagiarism is an act of using another person's words or ideas without giving credit to that person. What happened? Like when we like use another person's words, like some statements or some sentence or ideas without giving credit to that person, this act is known as plagiarism. This is one definition given by Merriam-Webster online dictionary. And Joy Locke in 1999 defined plagiarism as unacknowledged copying of documents or programs that can occur in many contexts. In industry, a company seek competitive advantage. In academia, like academics may seek to publish their research in advance of their colleagues. So plagiarism's like area is very wide. It can be there in industry, academia, and other sphere of life. So this is how Joy and Locke define plagiarism. Then on a lighter mode, Wilson Meisner, a famous American playwriter, he says that if you steal from one author, it's plagiarism, and if you steal from many, it's research. So this is something which is said by Wilson Meisner. As I said, he's a famous American playwright. And when we like steal or pass off as one's ideas or words, it is known as plagiarism. So this is one thing that I wanted to show to you. And then we are supposed to look at the origin of this word plagiarism. The word plagiarism is derived from the Latin word plagiare, which means to kidnap or abduct. And Roman poet Martial, somewhere between 102 and 104 AD, first used the Latin word plagiarus to describe a seemingly unnamed literary thief in his poem. And plagiary, a derivative of plagiarus, was introduced into English in 1601 by dramatist Ben Jonson to describe someone guilty of literary theft. So this is how this word is basically like came into picture, and the derived form plagiarism was introduced into English around 1620. So this is a small history about the word plagiarism, and let's like try to see it
through the idea of academia, like how we people in academia say this word plagiarism. In academic context, plagiarism tends to be interpreted as the misappropriation of the intellectual property of one individual by another. So when somebody steals somebody's idea or some like structure or some sentence or words, it is always taken as academic plagiarism. According to Bela Gibb, academic plagiarism encompasses the use of ideas, concepts, words, or structures without appropriately acknowledging the source to benefit in a setting where originality is expected. So whenever we like publish any article or research paper, it is expected from us that we like produce some original document or original idea. But when we copy somebody's idea or structure or concept or etc., etc., it comes like under the purview of plagiarism. And before moving to the next slide, I wish to like have interaction or small interaction with 2 or 3 participants. When you write some like research paper or some academic document, what sort of like practices you follow to avoid plagiarism? अगर एक या 2 पार्टिसिपेंट मुझे ये बता पाए कि जब आप कोई एकेडमिक डॉक्यूमेंट लिखते हैं या किसी भी तरह की एकेडमिक राइटिंग करते हैं, चाहे वो थीसिस है, पेपर है, आर्टिकल है, डिजिटेशन है या गाइड करते हैं, तो क्या आप प्लेजरिज्म से रिलेटेड कुछ ऐसी प्रिकॉशंस लेते हैं? अगर मुझे बता पाए, and that would probably help me to frame my presentation on plagiarism, because in that way I'll get some idea like what sort of things I should focus on. 2 या 3 पार्टिसिपेंट्स अगर मुझे बता पाए कि वो किस तरह से करते हैं प्लेजरिज्म से डीलिंग, क्या प्रिकॉशंस लेते हैं या कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जब आप लिखना शुरू करते हैं तब आपके मन में प्लेजरिज्म को लेकर के क्या कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स रहते हैं? इस तरह से अगर आप 1 या 2 पार्टिसिपेंट मुझे बता पाए, and that would probably help me to structure my presentation, and I'll be focusing on those issues like and I'll get some idea कि मुझे क्या-क्या बताना चाहिए. तो 1 या 2 पार्टिसिपेंट अगर मुझे बता पाए तो I hope I am audible to you. Yes, sir. You are audible, sir. Okay. So I hope my question is clear to you. I'm expecting that 1 or 2 participant please tell me that how you like how you people as a faculty member deal with this problem of plagiarism when you start writing some academic document in form of research paper or some article etc. कैसे करते हैं आप लोग? जी Dr. Suman, I hope I am audible to you. Yes, sir, you are audible. मेरा सवाल भी शायद आप तक पहुंच गया होगा. मैं सिर्फ थोड़ा सा आइडिया लेना चाह रहा हूं कि हम लोग कैसे करते हैं, फिर वैसे ही हम बात करेंगे और मुझे थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा कि मुझे कौन-कौन सी एस्पेक्ट्स को टच करना है, बिल्कुल बिगिनिंग से करना है या थोड़ा सा आगे से चलना है. तो ये मैं थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे रुक के लेना चाह रहा था. इफ यू लाइक डोंट फील अनकंफर्टेबल. सर जब कोई राइटिंग करते हैं तो उसमें एक तो लैंग्वेज चेंज करनी होती है, उसमें अपने आइडियाज को अपने हिसाब से लिखेंगे और दूसरा ये है कि एक्नॉलेज भी करेंगे. इस सोच से आप जी. ओके, वेरी गुड. और कोई पार्टिसिपेंट कलीग कोई बताना चाह रहे हैं कि कैसे वो जब शुरू करते हैं तो कैसे प्लेजरिज्म को अवॉइड करने के लिए उनके मन में कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं या वो किस तरह करते हैं यूजुअली? जी. Any other participant, please? Okay. So let me proceed with my slides further.
Yes. So I think here I left. So then let's try to understand the elements or features of plagiarism. So according to T. Fishman, plagiarism occurs when someone use words, ideas, or work products attributable to another identifiable person or source without attributing the work to the source from which it was obtained, in a situation in which there is a legitimate expectation of original authorship in order to obtain some benefit, credit, or gain which need not to be monetary. So these are various features or various modes of plagiarism when you copy someone words, ideas, work, or some intellectual property. So what is considered as plagiarism? Means what comes under the, like what are the things which come under the preview of plagiarism. So taking quotations or passages directly without citation. Sometimes we take some quotation, but when we forget to cite it, it will come under the preview of plagiarism. Taking ideas without giving credit. अब कई बार क्या होता है, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको बताना चाहूंगा. कई बार हम या कोई ऑथर आइडिया को कॉपी कर लेता है और उस आइडिया को कॉपी करके क्या करता है कि उसका कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर या कुछ वर्ड्स को चेंज कर लेता है. अब क्या होगा, जब आप उस एकेडमिक डॉक्यूमेंट को सॉफ्टवेयर से प्रोसेस करेंगे, हो सकता है सॉफ्टवेयर उसमें जो प्लेजरिज्म परसेंटेज दिखाता है वो कम हो, यानी कि यूजीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लेस देन 10% होना चाहिए प्लेजरिज्म. तो हो सकता है वो 8 या 9% दिखाए, लेकिन आइडिया उस ऑथर ने कॉपी किया है. तो वो कौन पकड़ेगा उस चीज को? आइडिया को सॉफ्टवेयर नहीं पकड़ेगा. उस आइडिया को पकड़ेंगे जब आप उसको पब्लिकेशन के लिए भेजेंगे, तो जो रिव्यूअर्स हैं वो उस चीज को देखेंगे और उस चीज को ट्रेस करेंगे. एंड लेट मी गिव सम एग्जांपल टू यू, लाइक कैसे प्लेजरिज्म हमें नुकसान पहुंचा सकता है. मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिए बिना आपको बताता हूं कुछ एग्जांपल पंजाब की एक यूनिवर्सिटी के. वहां एक सीनियर प्रोफेसर के अंडर एक स्कॉलर ने पीएचडी सबमिट किया, एंड दैट प्रोफेसर ऑन दी लाइक फेथ ऑफ दैट स्कॉलर, उन्होंने उसका थीसिस जो है साइन कर दिया, उसको अलाउ कर दिया, and he somehow submit his consent that this thesis is fit for submission and as per the regulations, etc., etc. So what happened next कि अब वो थीसिस सबमिट हो गया, उस पर्सन को डिग्री अवार्ड हो गया, और जब वो थीसिस ऑनलाइन कहीं आया तो किसी पर्सन का वो थीसिस में से काफी कुछ कॉपी था, तो उस पर्सन ने कंप्लेंट सबमिट किया उस यूनिवर्सिटी में, और फिर कुछ एक कमेटी का फॉर्मेशन हुआ, एंड अल्टीमेटली कमेटी ने कुछ कमेंट दिए कि वाकई में इसमें बहुत सारा जो स्ट्रक्चर है, वर्ड्स है, आइडिया है, वो कॉपी कर रखा है उस स्कॉलर ने. और अल्टीमेटली क्या हुआ कि उस टीचर को, उस सुपरवाइजर को या प्रोफेसर को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया पीएचडी गाइड करने से. और उस जो स्कॉलर था उसको रीसबमिशन के लिए कहा गया थीसिस का. तो इस तरह से क्या होता है कि वी एज ए टीचर और आल्सो like under some kind of threat, some kind of like probable losses that can probably damage our academic standing in academia. So we must be very very careful nowadays, because इंटरनेट का इतना ज्यादा यूज हो रहा है कि आपके स्टूडेंट्स या आपके स्कॉलर्स ही आप अपने आप तो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते ही लेते हैं, लेकिन कभी कभी आपके स्टूडेंट्स या आपके स्कॉलर्स आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं. तो वी नीड टू बी केयरफुल लाइक इन ऑल एस्पेक्ट्स. जब हम अपना खुद का भी पब्लिकेशन कर रहे हैं उसमें भी, या कोई भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, एट द सेम टाइम वी नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर गाइडिंग आवर स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स फॉर देयर थीसिस, डिसर्टेशन एंड इवन मास्टर डिग्री प्रोजेक्ट्स. So these are like the things which considered as plagiarism. So changing words but copying the sentence structure of a source without giving credit, failing to put a quotation in quotation marks,
like whenever we write quotation, it should be in quotation marks. Otherwise, software will treat it as plagiarized sentence, and your percentage of plagiarism will increase. Giving incorrect information about the source of information. Sometime what happened, someone may give some incorrect information about the source of information. तो अगर आपने उसको गलत लिखा है और वहां से आपने कॉपी किया है, तो it will also come under the purview of plagiarism. Copying so many words or ideas that it makes up the majority of work, whether credit is given or not. तो कई बार हम बहुत सारे वर्ड्स और आइडियाज कॉपी कर लेते हैं. मैं कुछ आपको एग्जांपल देके भी बताऊंगा. कुछ एक फाइल है जिसमें एक एकेडमिक डॉक्यूमेंट है जिसमें उस तरह से कॉपी किया गया है. तो certainly you will get some fair idea after looking at those like examples. And taking work from previous work without reference to the work. So this also like happened sometime कि हम कोई किसी के पहले किए हुए काम को बिना रेफरेंस दिए अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट में लिख देते हैं. तो दिस इज ऑल्सो like a kind of plagiarism. So look at these statistics, like how plagiarism is all the way increasing throughout the world. It's not in like only within India, but plagiarism is all the way like increasing throughout the world. These are some like statistics given in this slide. Like Center for Academic Integrity came with certain data that 80% of college students, they admitted to cheating. And Psychological Record 30 says that 36% of undergraduates plagiarizing written material. And 1991 Rutgers University study 66% of 16,000 students, which is 31 prestigious US universities, they admitted to cheating. So these are some like data, facts and figures and some statistics which basically reveal that plagiarism practices are all the way increasing in like different corner of the world. It's not only with India कि हम ही सिर्फ या हमारे यहाँ ही plagiarism बढ़ रहा है. It is an activity, it is an like kind of activity which is like increasing throughout the world. So plagiarism has become a concern for everyone in academia. It is Indian universities or the universities around the world. So as per the statistics, like prestigious institutions in US university, like US universities are also somehow dealing with the problem of plagiarism. Like University of California, Berkeley official report, that plagiarism increased 744% from 1993 to 1997 in the campus. So these are the kind of statistics which highlight basically that how this issue has become alarming for academic fraternity. So then a very important question arises here, that why people plagiarize. लोग plagiarism की तरफ क्यों जाते हैं, वो क्यों करते हैं plagiarism? So these are probable answer of this question, and maybe the reasons that why people plagiarize. There may be lack of writing skills. This may be one reason that people are lacking in terms of good writing skills. That's why they try to copy and entangled in the problem of plagiarism. There may be misconception, ignorance of plagiarism. कई बार हमें पता भी नहीं होता है कि हम plagiarism कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो बहुत सारी गाइडलाइंस आ गई हैं इस पे. जुलाई 2018 में UGC ने बहुत clear cut guidelines दे दी हैं, and before that there were no clear cut guidelines. So somehow we were not bothering much about plagiarism earlier, but now as it is like it has come clearly, UGC has come with a clear cut regulations. So now I think ignorance factor may not like be there. So lack of another reason may be lack of strict academic discipline. So this may be one reason that in academia we are not much disciplined
in terms of like writing some academic documents. And next reason may be lack of research methods and skills. So our research methods and research process and proceedings may not be like clear. So this may be one reason. Lack of referencing and citation skills. So this is also be a reason that we don't know how to cite some like someone's work and how to write references. Although nowadays we are having some online tools and techniques through which you can write references and even cite somebody's work. So it has become like technically very easy nowadays, but it may be the case that only few people are or less people are aware about this facility, which is all the way even available in MS Word. I think many of you must be aware that even MS Word can provide you a very good facility of referencing. You can write reference as per the style you want, like MLA style or APA style. So whatever style you want, MS Word extend you facility somehow through which you can manage your reference. Time factor. Everybody is in hurry in this world nowadays. And sometimes we like due to scarcity of time, cut copy and paste culture is all the way booming nowadays. So समय नहीं होता है फिर हम कर लेते हैं. Easily availability of reading material text on the internet. Yes, in the beginning also I pointed out this thing that due to the heavy use of internet and easily availability of reading material, people are prone to this like copying and putting somebody's work on their document. So this is a very normal practice nowadays. अब जैसे आप के PhD स्कॉलर को आप कहते हैं कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर कीजिए, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर पहले इंटरनेट के बिना जब स्कॉलर्स करते थे तो बहुत समय लगता था, even 6 months time, because at that time if somebody like किसी को रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना है तो उसको काफी सारी जगह पे लाइब्रेरीज में विजिट करना होता था. अभी क्या है कि बाय सिटिंग एट योर प्लेस with the help of internet and various like search engines and various databases, you can do it by sitting at your place and again in a very less time. So but this thing has created some problem for the scholars that somehow due to their ignorance or many other reasons they may like follow certain plagiarized practices and all. So this thing is always like a matter of consideration, and whenever you use the internet or any database or any text which is all the way available on the internet, you must be very careful. Then lack of knowledge or subject matter. So this may be also one reason. Lack of patience. Sometimes we are lacking in terms of patience in academia, and we may like copy, cut, paste and all those like things. Cut and paste culture in research and academic community. Sometimes like what happened कि conference की डेट बहुत नजदीक है, हमें कोई पेपर बनाना है and we like हमें गूगल से सर्च किया. कई बार तो ऐसा होता है कि जो भी उनके पास पेपर पहुंच रहे हैं काफी सारा प्लेजरिज्म उनको आपस में ही मिलता है, एक दूसरे से कॉपी किया हुआ, क्योंकि गूगल के जो फर्स्ट 5-6 सर्च अटेम्प्ट्स होते हैं उनसे भी काफी कुछ लोग कॉपी करते हैं. तो ये कट एंड पेस्ट कल्चर के कारण भी प्लेजरिज्म की प्रॉब्लम जो है काफी बढ़ रही है. Sometimes sheer lethargy. People are lethargic nature in academia. They may follow, they may do certain plagiarism thing due to their lethargic nature. So these are the reasons that why people plagiarize. Then let's categorize the plagiarism. There are various types of plagiarism. Like here, two categories are highlighted in this slide: unintentional and intentional plagiarism. So unintentional, as the name indicates, when you don't know you are doing something like wrong in terms of plagiarism, it is called unintentional. Intentional, when you know that you are all the way copying somebody's work and without giving
proper credit to that author or that person. So these are the kind of things. These are the types of plagiarism actually. Means plagiarism of words, plagiarism of structure, and plagiarism of ideas, plagiarism of authorship, and plagiarism of self. So I'll be like putting some time to explain about like these types of plagiarism. Like plagiarism of words means when we copy somebody's words as it is. Structure of something, some model or something like that. Then some idea means the core or heart of that paper, right? Then plagiarism of authorship, बिल्कुल simple होता है. Like you pick up someone paper and just write your name. It is called plagiarism of authorship. And plagiarism of self, which is like very crucial nowadays. इसमें मैं थोड़ा सा यहाँ पे रुक के एक एग्जांपल देना चाहूँगा. And one more thing, if you have any question, you can ask in between, no problem at all. If you have any doubt, any question, or any kind of addition that you want to make here, you are welcome to submit, or you can just put in like message box. So I'll be answering those queries. So plagiarism to self. Let me give my own example about my PhD thesis, which is all the way available on this internet. Shodh Ganga is a website where all PhD theses are available. So it is expected that when we write some thesis, no doubt it should be plagiarism free. लेकिन हमें थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि हम अपने उस थीसिस से कुछ 2 या 4 पेपर अच्छे निकाल लें. So I did the same thing. After submission of my thesis, I draw out one paper and submit it to a reputed journal. And whenever, like when the comments came about that so and so कि आपका जो ये thesis है इससे आप copy कर रहे हैं, then I wrote to that like editor of that journal that it's my own thesis. But certainly they hardly like convinced, because and then only I got some idea about the self plagiarism, and it is not allowed in academia कि आपने जो एक बार आपने डॉक्यूमेंट एक बार कहीं सबमिट कर दिया तो दूसरी बार आपको सेम सबमिट नहीं कर सकते. Like I submitted that kind of research in the form of a thesis, so I cannot submit it again like in the form of research paper. ठीक है ना, पूरा change हमें करना पड़ता है. तो these are the various types of plagiarism. Then some important aspects like citation, quotation, summarizing, paraphrasing. So इनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं. Citations, you know, is a very important element in research. And here one fine example is all the way given here. Like here on my left side, original source is given. And on my right side, correct use of this citation is given. Like if you can see, like you can see these red colored words where Murphy 18, like you have cited it clearly, and this is the correct use of citation. Like when you write somebody's like work or somebody's words or structure or idea, you should cite it clearly. Like here the correct use of citation is given, so you can follow this. Then quotation, like in research work, academic documents, we use quotations, and this is how we can use it. This is the original text, and this is the incorrect use of, on my right side, incorrect use of this text. You should not use like this. This is the correct use. As Treadway 2002 points out, the betterer can afford to hire expensive lawyers who are well versed in the intricacies of the judicial system. And this is like clearly in inverted commas. This quotation is in inverted commas. So quotation must be in inverted commas, otherwise it will be like taken as the plagiarized part.
Then sometime we follow the process of summary, like condensed version of author key points. We can extend up to a few sentences or even longer based on the complexity of the author's idea to be conveyed. And when summarizing, you must cite the source. So whenever you are like summarizing some work, you must cite the source. Like this is the way, this is how we can summarize some part of the text. This slide, I think, clearly explained about the summarizing process. Here, the author is Nickerson. He argues that clear communication like this, and page number 737 at the end of this sentence. So this is how we can summarize. Means we can condensed, and we can make it precise through the process of summarizing. Then paraphrasing, it's very popular when you deal with plagiarism issue. Here in this particular slide, you can see one sentence. Original sentence is, ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. This is original sentence, and this is incorrect paraphrase. Don't ask what your nation can give you. Instead, consider what you are willing to do for your country. So incorrect paraphrase में क्या है कि यहाँ पे author का नाम कहीं भी mention नहीं है. So correct paraphrase may be like this: John Kennedy's introduction stresses the importance of citizens becoming civically engaged in their country's affairs. So this is how you can paraphrase things so that your academic document become plagiarism free. So these are some kind of plagiarism of words, कि कैसे हम plagiarism of words करते हैं. Direct plagiarism is the word for word transcription of a section of someone else's work without attribution. हम कई बार क्या करते हैं कि कुछ लाइनें किसी पैराग्राफ से उठा लेते हैं और अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट में इसको कॉपी कर लेते हैं, तो वो डायरेक्ट प्लेजरिज्म होता है. क्लोन, सबमिटिंग अनदर्स वर्क वर्ड फॉर वर्ड एज वंस ऑन. ये काफी सारी चीज, फोटोकॉपी बिल्कुल ही कई बार हम सारे का सारा टेक्स्ट हम कॉपी कर लेते हैं या ऑथर कोई कॉपी कर लेता है, तो उस तरह से भी वर्ड्स का प्लेजरिज्म बढ़ता है. Yes, यहाँ से with the help of this example, you can understand this word for word plagiarism. This is the original source material, and this is the source, and here the plagiarized version. So this yellow color text in the plagiarized version box is all the way taken from the original source material as it is. Starting from the first technology was the primitive modes of communication used by prehistoric people. It is all the way taken as it is. So this is the plagiarized version, and on my right side of the slide, this is the correct version, Frick 1991. Here you have clearly mentioned the author name. So it is the correct version of doing the things, right? So then the other thing, plagiarism of structure. So there is a term called Mosaic plagiarism. It's copying phrases from a source without using citation. And actually, I think I should skip it because things are in detail. So you may not find it more you find it more technical, so we can skip it. I think this slide. Yes, yes. Here I would like to explain plagiarism of self. So, as drawing 2006 suggests, self-plagiarism occurs when authors reuse their own previously written work or data in a new written product without letting the reader know that this material has appeared elsewhere. Just a few minutes back, I gave you an example of my own thesis and then research paper, how I submitted research paper for my thesis, and certainly it was
taken as a plagiarism work by that particular journal where I submitted my thesis. So we must be very careful. अब जनरली क्या होता है कि अभी जो पीएचडी के प्रैक्टिसेस हैं या यूनिवर्सिटीज की जो पॉलिसीज हैं उसमें क्या होता है कि जो स्कॉलर है उसको एक या दो रिसर्च पेपर पब्लिश करने होते हैं अपना थीसिस सबमिट करने से पहले। अब स्कॉलर ये कंफ्यूजन में होता है कि अगर मैं अपने थीसिस में से दो पेपर पहले से पब्लिश कराऊंगा और बाद में जब थीसिस सबमिट करूंगा तो थीसिस में तो उनका ही प्लेजरिज्म आ जाएगा, वो जो दो पेपर पहले से रिसर्च जर्नल्स में पब्लिश्ड हैं। तो ये स्कॉलर्स को, खास करके पीएचडी स्कॉलर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसका तरीका कुछ ऐसे होता है कि या तो आपको टेक्स्ट चेंज करना पड़ेगा या आप प्रॉपर उसका साइटेशन देंगे वो 10% में आ जाएगा। इस तरह से आपका कुछ उसका सॉल्यूशन रहता है। तो प्लेजरिज्म ऑफ सेल्फ इज आल्सो एन इशू ऑफ कंसर्न नाउअडेज। प्लेजरिज्म ऑफ आइडियाज, हमने बीच में बात किया है कि जब किसी का आइडिया हम कॉपी कर लेते हैं, चाहे आपने वर्ड्स चेंज कर दिए हैं और सेंटेंस को चेंज कर दिया है, लेकिन आइडिया सॉफ्टवेयर तो नहीं पकड़ेगा उसको। मैंने जैसे बीच में भी बताया कि उसको पकड़ में करने के लिए जो आपके रेफरीज हैं या जो रिव्यूअर्स हैं वो ही उस चीज को ट्रेस आउट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर मे नॉट बी एबल टू ट्रेस आउट द प्लेजरिज्म ऑफ आइडियाज, बिकॉज सॉफ्टवेयर का तो जो मेथोडोलॉजी है या जो उसका काम करने का तरीका है वो सिमिलरिटी इंडेक्स पे काम करता है, जो मैं भी आपको प्रैक्टिकली करके भी बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर से हम कैसे प्लेजरिज्म एक डॉक्यूमेंट का चेक करते हैं, ट्रेस करते हैं, और कैसे हम फिर उस प्लेजरिज्म की परसेंटेज को रिड्यूस करते हैं, वो सारी चीजें। सो दिस इज हाउ। अब जैसे यहाँ से अगर आप देखें तो एक एग्जांपल दिया गया है इस पर्टिकुलर स्लाइड में, एग्जांपल ऑफ प्लेजरिज्म ऑफ आइडिया, कि आइडिया कैसे चुरा लेते हैं, कैसे आप आइडिया को कॉपी कर लेते हैं। Accepted from team Moon, how 4 lakh people landed Apollo 11 on the moon by Catherine Trimesh, New York, इस आपको दिया गया है। तो what I mean to say that कि जब आप आइडिया कॉपी करते हैं और उसको अपने वर्ड्स में लिख लेते हैं तो वो उसको आप प्लेजरिज्म फ्री डॉक्यूमेंट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपने आइडिया कॉपी कर लिया है, सेंटेंस अपने हैं आपके, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं वो जब आप रिव्यूअर्स के पास भेजेंगे या आप जर्नल्स में पब्लिकेशन के लिए भेजेंगे तो वो उस चीज को ट्रेस आउट करेंगे एंड योर डॉक्यूमेंट मे नॉट बी लाइक पब्लिश्ड इन दैट पर्टिकुलर जर्नल ड्यू टू द आइडिया प्लेजरिज्म। सो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल। लेट मी जस्ट yes, this is also one example of idea plagiarism. I have already explained to you. प्लेजरिज्म ऑफ ऑथरशिप मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद देन वेरी इंपॉर्टेंट इशू, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ प्लेजरिज्म, लाइक व्हाट आर द लीगल गाइडलाइंस related to the plagiarism. An author has the right to sue a plagiarist. Yes, it is always there. Whenever an author like feel that somebody has stolen his idea or plagiarized his document, so he always have the right to sue a plagiarist. Some plagiarism may also be deemed a criminal offense, possibly leading to a prison sentence. Yes, it is there in different countries. Like I'll be discussing with you now, like in the next part of my presentation, about the UGC guidelines regarding the plagiarism, where we will be discussing about the different penalties decided by the UGC for different kinds of like plagiarism activities. Penalties vary depending on jurisdiction, the charges brought, and are determined on a case-by-case basis. तो ये केस बाय केस बेसिस होता है, जैसे कि हम यूजीसी गाइडलाइंस को भी डिस्कस करेंगे कि कितना परसेंट आपने प्लेजरिज्म किया है, तो उस बेस पे उसका पेनल्टी डिसाइड होता है. Students who commit plagiarism may be subject to grade or disciplinary penalties which vary by institution. So these are the legal aspects which are there. As you know that plagiarism is punishable
So then the important part of my presentation, like as I said, we'll be discussing about some plagiarism detection tools, how to detect plagiarism. And there are certain softwares with the help of which you can detect softwares. There are certain commercial softwares. आपके institution ने भी subscribe कराया होगा. Like Turnitin is very famous and widely used plagiarism detection software. Then Urkund, like in our university BPSMB, we have Urkund software, which is all the way subscribed by our library, and through which we always like process our PhD thesis and other academic documents and detect plagiarism in those documents. So these are commercial softwares which are there for plagiarism detection, like Authenticate, Turnitin, Pledge Trace Tracker, Urkund, VeriGuide, and the Plagiarism Checker. These are some commercial softwares which are available. और आप में से काफी लोगों ने इसको यूज भी किया होगा कोई ना कोई सॉफ्टवेयर, मुझे लगता है. तो ये कुछ 5 या 6 जो मेन सॉफ्टवेयर हैं कमर्शियल सॉफ्टवेयर ये हैं. उसके बाद जैसे आप टर्निटिन की बात करते हैं, एज आई सेड इन बिटवीन दैट टर्निटिन इज अ वाइडली यूज्ड प्लेजरिज्म डिटेक्शन कमर्शियल सॉफ्टवेयर. और इसका मैं एक एग्जांपल भी आपको देके बताऊंगा व्हेन वी विल बी डूइंग हैंड्स ऑन एक्सरसाइज कि कैसे हमने ये करना है. सो दीज आर सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सॉफ्टवेयर. तो इसका डिटेल मुझे लगता है बताने की आवश्यकता नहीं है. यस, दीज आर सम ओपन सोर्स एंड फ्री सॉफ्टवेयर. अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि आप इंटरनेट से कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप फ्रीली विदाउट एनी चार्जेस अपना डॉक्यूमेंट प्रोसेस करके उसमें से जो भी प्लेजरिज्म डिटेक्शन है वो कर सकते हैं. एंड दीज आर सम ओपन सोर्स एंड फ्री सॉफ्टवेयर लाइक प्लेजियम, प्लैगस्कैन, वाइपर, कॉपीस्केप एंड साइटप्लैग. These are some open source free softwares. So this is some information about this software. Yes. So these are the things. And here I end up with this presentation, like as well as slides are concerned. I'm like done with all slides. Now, first of all, I'll be taking your questions or your doubts or your additions regarding regarding this presentation that I have made. So I request you to please come with your questions, and after your question answers, I'll be giving a brief outline about the UGC guidelines regarding plagiarism, and then we'll be doing certain hands-on exercise with the help of some plagiarism detection software Turnitin, and I'll tell you that how to process your document through that software. So I request you to please come with your questions or any queries or doubts you have in your mind regarding the kind of information I shared with you, please. क्योंकि मैं कुछ ना इसको एक लेक्चर की तरह हम नहीं करेंगे. हम चाहते हैं कि कुछ आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करें या अपने जो प्रॉब्लम्स आपको. Hello, Dr. Sir, good afternoon. जी डॉक्टर Sir, yes, sir. I just completed my PhD last month. I want to know, suppose I want to write some paper from my PhD matter. Is it impossible to write paper from that matter? Or if you want to have some paper, so what kind of precautions or how we can manage that, sir? I mean, I just want to know, is it impossible, or we should never prepare write research paper from our PhD matter? No, sir. Dr. Gyan, this is very important question you raised here. I will try to answer this question with different perspective. आपने जैसे PhD अपना थीसिस सबमिट किया है, एंड वो जब ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा आफ्टर इट्स इवैल्यूएशन एंड ऑल, वो शोधगंगा पे अवेलेबल होता है.
तो व्हाट हैपेंड कि जैसे ही आप उसमें से एज इट इज कोई पेपर निकालेंगे, मैं थोड़ा सा ना आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बताना चाहूंगा। जैसे आपने उसमें से कोई पेपर निकाला and you like submitted that paper to a journal, and that journal will process your paper through a software. So what happened कि आपका जैसे कि वो थीसिस है शोधगंगा पे अवेलेबल है, और जैसे ही वो प्रोसेस करेंगे तो वहां से वो मैच करेगा। So this will be a case of self plagiarism. This will be a case of self plagiarism. तो आपको इसमें करना क्या है प्रैक्टिकल में बताता हूँ। जैसे अब ये इम्पॉसिबल नहीं है कि या हमें ये नहीं करना है कि थीसिस से हमने पेपर निकालना ही नहीं है। दिस इज नॉट द राइट वे। हमने जो भी रिसर्च किया है उसका मैक्सिमम बेनिफिट हमें लेना है। तो पीएचडी में हम इतनी मेहनत करते हैं तो उसमें ये हमारे कुछ पेपर्स भी उससे निकलने चाहिए। तो उसका तरीका ये होता है कि आपको उसमें टेक्स्ट जो है वो चेंज करना पड़ेगा, एज इट इज आपका पब्लिश नहीं होगा। और आपका भी जो थीसिस है उसमें साइट आपने उन रिसर्च पेपर में जाहिर सी बात है करना ही करना है। तो दिस इज हाउ like we deal with this problem. Whatever like you wrote in your thesis, you have to change it somehow, like in the form of like paraphrasing or some sentence structure, क्योंकि सॉफ्टवेयर का जो मेथोडोलॉजी है प्लेजरिज्म डिटेक्शन का, जो आपने सेंटेंस लिखा है मैं प्रैक्टिकली आपको बताना चाहूंगा। जैसे आपका एक सेंटेंस है उसमें 20 वर्ड्स हैं, ठीक है। अब उसमें वो 14 वर्ड्स एक साथ जहां पे है उसको डिटेक्ट करता है, तो उस हिसाब से वो परसेंटेज निकालता है, जिसको हम सिमिलरिटी इंडेक्स बोलते हैं सॉफ्टवेयर की भाषा में, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी मेथोडोलॉजी आपको अपनानी है कि जो आपने पीएचडी थीसिस में जिस तरह से लिखा है उसको चेंज करना पड़ेगा, और अपना जो रेफरेंस है या जो भी साइटेशन है अपने ही वर्क का वो प्रॉपरली करना पड़ेगा। अदरवाइज आप जो है उसको एज इज पब्लिश नहीं करा सकते। कुछ लोग अभी क्वेश्चन आया है कि आवर थीसिस और एंड हैव अ कॉपीराइट। देखिए जब आप थीसिस सबमिट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो यूनिवर्सिटी को सबमिट कर देते हैं, और यूनिवर्सिटी को सबमिट करने के बाद क्या होता है कि वो यूजीसी उसको शोधगंगा पे अपलोड कर देता है। तो उसमें से जब आप पेपर्स निकालने के लिए तो फ्री हैं, लेकिन आप जर्नल्स में जब भेजेंगे और उस पे जब वो प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर से प्रोसेस करेंगे तो वहां पे वो चीज वो अगर मोर देन 10% ये जो भी उस जर्नल का अपना एक गाइडलाइंस है उससे ज्यादा होता है तो वो आपको रिवीजन के लिए बोलेंगे, और रिवीजन में आपको चेंज करना पड़ेगा। नो डाउट आपका जो आइडिया है क्योंकि वो आपका है तो आप उसको रख सकते हैं, लेकिन जो जर्नल की गाइडलाइंस हैं रिसर्च जर्नल्स की वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और ये बहुत सारे लोगों के साथ, स्कॉलर्स के साथ और फैकल्टी के साथ आजकल प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं आज के प्लेजरिज्म का जो भी सिनेरियो है यूजीसी गाइडलाइंस है उसके संदर्भ में। हाँ जी ज्ञान जी और बताइए। Yes, sir, definitely. Actually, I have written 2 papers from my PhD work last month. So exactly as you guided me, similarly I have done. I have changed the interpretation. I have changed the way the sentence formations, Yes. even the part include in introduction and other conclusion, findings, etc. So I have changed complete sentence formation. Even my observations about various questions, I have given my observations in different kind of sentence formation. Right. It's good. Thank you so much, Dr. Kishan sir. Right. Sir, I have one question. Please. Sir, I'm Dr. Sanjoy from Imphal, Manipur. Oh. Sir, I want to publish a paper from my thesis work. Right. But I can change language and phrase everything, but I cannot change my value. That is numerical value. That is, I'm a student of, I'm a research scholar of science background. So we cannot change the numerical value. So what to do in this way? So here the numerical values. Yes, I got your question. So the solution of your problem is that you can put your numerical value like in quotation, or you can give the proper citation of that work. Like in mathematics, like whenever you have some equation or something like that,
you always put in like equation, and that would probably the right way to write in the research papers and like in some other academic documents. So like if you have some data of some banks, like banks profits or something like that, so that you can always use in research papers. And so this is how you can use those numerical values or numerical data in your thesis, and in that way you can deal with the problem of plagiarism. So I think I address your question properly, Dr. Sanjoy. Are you satisfied with the answer? Any other question, please? You are coming with very relevant and very practical questions. So any other question? Yes, I'm satisfied with your answers. Okay. Any other question? Okay. So Dr. Suman, will you please tell me like how much time I have? Dr. Suman, will you please confirm to me that how much time I have like right now that I can spend with you? प्लीज सर कैरी ऑन, काफी टाइम है आपके पास, 4 बजे तक Okay. meeting है, So और जब तक आप खत्म करेंगे हम रहेंगे सर. right. So now I would like to share with you the UGC guidelines regarding plagiarism and academic integrity. I hope these guidelines are visible on my screen. Yes sir. Okay. So I advise you to study thoroughly these UGC guidelines. कुछ 5 या 6 पेज की ये गाइडलाइंस हैं, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट हैं, जो मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट्स को, स्कॉलर्स को, फैकल्टी मेंबर्स और स्टाफ को पढ़नी चाहिए. तो अभी हम कुछ जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं सभी तो नहीं हम कर पाएंगे, लेकिन जो इन गाइडलाइंस के इम्पोर्टेंट पार्ट है उस पे हम बात करेंगे. So these guidelines are like on your screen now. So I'll be taking some important aspects of these guidelines, and let me start these guidelines are known as the Promotion of Academic Integrity and Prevention of Plagiarism in Higher Education Institutions Regulation 2018, and these guidelines were issued in July 2018, and everything related with plagiarism and academic integrity are clearly defined in these guidelines. So let me give you a brief outline about these guidelines. So first of all, let's discuss this part. Yes, the on which these guidelines are going to apply. These guidelines, if you can see this section first, part B, they shall apply to the students, faculty, researchers, and staff of all higher education institutions in the country. So these guidelines are going to apply on all students, faculty, researchers, and staff. Staff here means non-teaching staff. So all four stakeholders of higher education institutions. And then the enforcement of this notification, these regulations shall come into force from the date of their notification in the official gazette. So date of enforcement is 23rd July 2018. So ये regulations जो हैं वो enforce में आ गए हैं. Let's talk about the definitions which are given in these regulations. Academic integrity. So academic integrity is the intellectual honesty in proposing, performing, and reporting any activity which leads to the creation of intellectual property. And this definition I also gave on my first part of my presentation on those slides which I shown to you. Then who is an author basically?
Sometime what is there that we have a paper in which there are 4 or 5 authors. So in that case, who is considered as the main author? So author includes a student or a faculty or a researcher or staff of higher education institution who claims to be the creator of work under consideration. अब जैसे कि मैंने बताया आपको, एक रिसर्च पेपर हमने मान लो 3 ऑथर्स हैं, उन्होंने भेजा कहीं पे, एक पहले नंबर पे है, एक दूसरे पे है और तीसरे पे है, 3 ऑथर हैं। तो अगर कोई प्लेजरिज्म का इश्यू आता है तो पेनल्टी किस ऑथर को लगेगा या तीनों को लगेगा, ये डिसाइड करने में हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसका मेन ऑथर कौन है। कई बार हम वर्ड यूज करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर, कई बार कुछ जर्नल्स यूज करते हैं वर्ड मेन ऑथर, हु इज मेन ऑथर। तो यहाँ पे मेन ऑथर वो है हु क्लेम्स टू बी द क्रिएटर ऑफ द वर्क अंडर कंसिडरेशन। अगर तीनों क्लेम कर रहे हैं तो तीनों को हम ऑथर मानेंगे, राइट? सो दिस इज हाउ वी डिफाइन ऑथर एज इन द लाइट ऑफ these guidelines. Then the important definition we need to understand is the F part, section 2 F part. Departmental Academic Integrity Panel shall mean the body constituted at the departmental level to investigate allegations of plagiarism. So as per these UGC guidelines 2018 regarding academic integrity and plagiarism, every department shall have a departmental academic integrity panel, and that departmental integrity panel will investigate the allegations of plagiarism. So this is how these regulations made a provision that कि हर एक department में departmental academic integrity panel होगा. And the other thing is that yes please, any question? Okay. Then the I part. जी कुछ जी डॉक्टर कृष्ण सर. Yes please. Sir, I have another small question. Please, You know, sometimes, yes, sir. Sometimes we see, as far as plagiarism concerned, our whole page is shown as a plagiarized, but we're just changing some inverted comma with the single commas or very minor changes. So that is plagiarism free. Or sometimes, suppose only these are 10 lines, but we have almost changed complete paragraph, still that is showing plagiarism. So what is that, sir? So yes, Dr. Gyan, there may be some cases where like you remove some inverted commas or you add certain inverted commas, so your plagiarism like percentage will increase or decreased heavily. So that's true, it always happens. And certainly like you have a paragraph and you change the whole paragraph, then also the plagiarism percentage is not all the way reducing. So these are the cases you definitely like find out. So the main reason of these like happening is that it's because of the software working methodology. Like when you use Turnitin, you may get different report. When you use Urkund, you may get different percentage or different plagiarism report. So it's up to the database of the software you are using, and sometimes it is because of the paraphrasing or the summarizing or other corrections or changes that you have made in your academic documents. So that may happen because of those reasons. So it's up to case. Like when you have 10 lines, suppose, and your percentage is 10%. Okay, suppose you change 2 words and your percentage may reduce up to 8%. So it is up to the academic document and the methodology of the software. These are the 2 reasons that will primarily decide the percentage of plagiarism in a particular document. So these are the reasons, Dr. Gyan. Thank you, sir. Okay. So let me define here the point L, where plagiarism is like defined by these guidelines. So plagiarism, as per these guidelines, means the practice of taking someone else's work or idea and passing them as one's own.
So I also discussed this particular definition in the previous part of my presentation through those slides. So this is how these guidelines defines plagiarism. Okay. Then the important part is the P, source. We always talk about the source, like from where you have like taken the material or the text or idea or sentence or structure. So source means the published primary and secondary material from any source whatsoever and includes written information and opinions gained directly from other people. So source means the published work, whether it is primary and secondary. So this is how we define source as per the guidelines, UGC guidelines 2018. Then the word staff. I talk about the four stakeholders like student, faculty, staff and researchers. So staff refers to all non-teaching staff working in higher education institutions in any capacity whatsoever, regular, temporary, contractual, outsource. So there is no discrimination here in terms of the definition of staff. Then the year, the important part is the T, academic year. Year means the academic session in which a proven offense has been committed. So here the definition of year has been like defined. Then we need to understand clearly the objective of these guidelines, UGC guidelines. So I'll be just discussing with you quickly. First objective is to create awareness about responsible conduct of research, thesis, dissertation, promotion of academic integrity, and prevention of misconduct, including plagiarism in academic writing among student, faculty, researcher, and staff. And to establish institutional mechanism through education and training to facilitate responsible conduct of research thesis, dissertation, promotion of academic integrity, and veterans from plagiarism. And the third objective is to develop systems to detect plagiarism and to set up mechanisms to prevent plagiarism and punish a student, faculty, researcher, or staff of higher education institutions committing the act of plagiarism. So these are the prime objectives of these UGC guidelines. Then let's talk about the next important part of these guidelines, the sixth part or section 6, where the various guidelines regarding curbing of plagiarisms are discussed. So let's talk about the part C, where it is like clearly mentioned that every student submitting a thesis, dissertation, or any other such document to the higher education institution shall submit an undertaking indicating that the document has been prepared by him or her and the document is his/her original work and free of any plagiarism. जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि आजकल जब भी किसी यूनिवर्सिटी में थीसिस आप सबमिट करते हैं तो एक अंडरटेकिंग स्कॉलर को देना होता है कि ये जो भी एकेडमिक वर्क है ये स्कॉलर का अपना वर्क है and it is all the way his or her original work and free from plagiarism. तो ये भी इन गाइडलाइंस में clearly mention है. उसके बाद the other important part of section 6, F part. Each supervisor shall submit a certificate indicating that the work done by the researcher under him/her is plagiarism free. Supervisor also shall submit a certificate where he or she will indicate that the work done by the researcher under him or her is plagiarism free. So here, as per the guidelines, both scholar and supervisor shall submit a certificate, right? So this is very important part. The other important part is that yes, the part 7, similarity checks for exclusion from plagiarism. So the similarity checks for plagiarism shall exclude the following: all quoted work. Actually जब आप सॉफ्टवेयर से
प्रोसेस करते हैं, जो हम अभी बात भी करेंगे जब प्रैक्टिकल हम इस पे कुछ एक्सरसाइज करेंगे, तो इसमें ये बताया गया है कि कौन कौन सी चीजें आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो ऑल कोटेड वर्क रिप्रोड्यूस्ड विद ऑल नेसेसरी परमिशन और एट्रीब्यूशन, all references, bibliography, table of contents, preface and acknowledgements, all generic terms, laws, standard symbols and standard equations. So these are the kind of things you shall exclude from the plagiarism, and that you can do through software. Like when you process your document through software, you can do certain settings wherein you can exclude these things which are mentioned in the part 7 of UGC guidelines. Then let's talk about the section 9 of the UGC guidelines, where detection, reporting, handling of plagiarism is clearly explained. So here I would like to just explain it clearly. If any member of the academic community suspects with appropriate proof that a case of plagiarism has happened in any document, he or she shall report to the departmental academic integrity panel. So as I said in the beginning, that each and every department shall have the departmental academic integrity panel, and that panel will look after the complaints received by that panel, and ultimately work on the complaints under the guidelines of the UGC. So this is how we take these things. And as well as the academic integrity, departmental academic integrity panel is concerned, this is the structure or the composition of the this panel. Chairman will be the head of the department, and members, and then other members. So this is how the structure of this panel will be there. Then the other important part is that we need to deliberate upon the penalties. Yes. So penalties in the case of plagiarism shall be imposed on students pursuing studies at the level of masters and research programs, and on researcher, faculty and staff of higher education institutions only after academic misconduct on the part of the individual has been established without doubt. When all avenues of appeal have been exhausted and individual in question has been provided enough opportunity to defend himself or herself in a fair or transparent manner. So these are the penalties. Section 12.1 or part 12.1 explain about the penalties decided by the UGC guidelines, like level 0, where similarity index is up to 10%. There is no penalty, or minor similarities are there. There is no penalty for this percentage. Level 1, when similarity is above 10% up to 40%, means 10 to 40%. Such students shall be asked to submit a revised script with a stipulated time, within a stipulated time period not exceeding 6 months. So those students who are basically found similarity index between 10 to 40% shall be asked to resubmit a revised script within 6 months time. So level 2, where similarity index is 40 to 60%, and these students shall be debarred from submitting a revised script for a period of 1 year. And when level 3 similarity index is above 60%, very alarming situation, such students registration from that program shall be cancelled. तो अगर किसी का 60% से ज्यादा है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का इसमें प्रावधान है. So these are the basically like for the thesis and dissertations, 12.1, and 12.2, penalties in case of plagiarism in academic and research publications, like for faculty and all. This is for thesis, this is for academic publications like articles, research papers and all. So again, 10 less than 10%, no penalty. 10 to 40% shall be asked to withdraw manuscript. That researcher, faculty or any scholar has to shall be asked to withdraw manuscript. Then case of 40 to 60%, there are three
provisions here. Shall be asked to withdraw manuscript, shall be denied a right to 1 annual increment if that person is all the way faculty, shall not be allowed to be a supervisor to any new master's, MPhil, PhD student scholar for a period of 2 years. So this is these are the provisions when somebody found to be in this category in terms of plagiarism. Then level 3, where similarity is above 60%, shall be asked to withdraw manuscript, shall be denied a right to successive annual increments, and shall not be allowed to be supervisor for to any new master's, MPhil, PhD student scholar for a period of 3 years. So these are the provisions which are there in these UGC guidelines regarding the penalty. So this is then the other important thing is the note 3, this one. Yes, note 3. Higher education institutions shall create a mechanism so as to ensure that each of the paper, publication, thesis, dissertation by the student, faculty, researcher, staff or the higher education institution is checked for plagiarism at the time of forwarding or submission. So it is expected under these guidelines that a faculty member shall check it before the submission of that particular document. So these are some brief outlines of the UGC guidelines 2018 regarding the academic integrity and plagiarism. So one important thing I would like to mention here is that as a faculty member, we should sensitize our students regarding this plagiarism issue. And I think I request and I also advise you all to study these 6-page document given by UGC. Everyone, I think, must study and understand this document before writing any academic document. That would be probably fine for us, because if something wrong done on our part regarding plagiarism, so that may just put us in any problem. So to avoid all those probable problems, the easy way is to read these guidelines clearly and to understand these guidelines and to sensitize our students, whether they are scholars or the master students or bachelor students, about these guidelines, right? And also just frame a mechanism at individual level to avoid these plagiarism issues in academic documents. So these are the some outlines I presented before you, which are framed by UGC regarding the academic integrity and plagiarism. So I hope you must have understood these guidelines. Any question about these guidelines? Any clarity or any question? Any question? Any question about these guidelines? I hope, and these guidelines are available on UGC website. You can download those guidelines, and as I said, we all must go through these guidelines and also sensitize our students about these guidelines, and that would probably a right way to deal with the problem of plagiarism. So now I'd like to proceed further and would like to share with you the practical part, wherein I would like to discuss with you how to process a document through a software, through a plagiarism check software. So let me open a software. Turnitin, I think you know, Turnitin I mentioned during my presentation. It is a software. It is a very popular and widely used software. So I have already opened the software, the window. So let me just share with you that how you can process your document through this software.
like let me start with the beginning. I think most of you, आप में से कितने लोगों ने इसको यूज किया है पहले? अगर आप बता पाएंगे तो मैं थोड़ा सा उसको उस तरह से स्टार्ट। आप लोग यूज करते हैं टर्निटिंग को? नो सर। यस सर, सर किया है यूज। आपने किया है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा ना जो मेन मैं फोकस करना चाहूंगा कि इसका जो आउटपुट आता है, जो रिपोर्ट आती है प्लेजरिज्म चेक करने के बाद, उसको हमने कैसे डील करना है उसके साथ, उस पर ज्यादा बात करूंगा। इसका प्रोसेस बहुत इजी है जिसके थ्रू हम इसको एकेडमिक डॉक्यूमेंट प्रोसेस करते हैं। इट इज वेरी इजी। सो आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन the second part wherein we need to alter our document, like let me just start with from the beginning. So when you like enter, I have taken login from somebody. So here I have, like, you have to create a class. अगर आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज या इंस्टीट्यूशन ने इसको सब्सक्राइब कराया हुआ है तो इस तरह से क्लास क्रिएट हो जाती है। लाइक एमबीए का मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। तो जब आप इसमें अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो दिस मेन्यू विल अपीयर एंड लाइक here I have a class called Savita second paper. So here like 3 options will be available, and when I want to submit a document, I have to select this submit button, and when I click the submit button, this will ask about the name, like I put Krishan. So I have to fill the information like paper 4, and then I have to upload the document. Let me just select the document, any document, which is, yes, this one. So this is the document, and then this will ask you to select this upload. When you press this upload button, the process will start, and then the next step, the software will ask to confirm whether it is your document or not. So let the process. Yes. So when you upload it, the software will provide you this information, like author name is this is the title of the assignment, submission title is this, and file name is this, and file size and page 22, words count 5165, and the characters. Then you have to confirm it. When you like press the confirm button, means document like has been uploaded, then you can just select this go to assignment box. Yes, this is the file paper 4 we have just uploaded. तो अभी इसका रिपोर्ट आने में थोड़ा सा ये 5 मिनट लेता है प्रोसेस करने में. आफ्टर 5 minutes our reports will be generated by this software, and we can in between I would like to like download this particular report जो मैंने अभी 29 नवंबर को एक चेक किया था. तो इस पे आप प्रेस करेंगे तो पूरा एक रिपोर्ट आपके सामने आएगा. तो लेट मी जस्ट I hope you are able to see these slides. Slides are visible to you, or the file is visible to you on your screen. Yes, आप देख पा रहे हैं सभी? Yes sir, yes sir. Yes. तो this is the outcome, this is the report generated by that software. अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चीजें, बहुत सारे टेक्स्ट को इसने कलरफुल कर दिया है. तो ये सारा जो कलरफुल पार्ट है टेक्स्ट का, ये प्लेजरिज्म के उसमें आता है. अब इसका हमें 2 चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखनी है, जो लोग यूज करते हैं वो आसानी से समझ पाएंगे. यहाँ पे एक ऑल सोर्सेज का बटन होता है, ठीक है, देख पा रहे हैं आप? अब यहाँ पे मेरा जो सिमिलरिटी इंडेक्स है वो कितना बता रहा है? 10% बता रहा है. कितना बता रहा है? 10%.
अब उस 10% में भी ये बता रहा है कि ये परसेंटेज है, यहां से ये कॉपी किया गया है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस सोर्स पे क्लिक करता हूं तो ये 4 सोर्स यहाँ पे बता, एक मिनट, यस। अगर आपको ये भी पता करना है कि ये कहां से कॉपी किया गया है, तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप, ये यहां से बता रहा है, दिस इज द साइट, यस, दिस इज द सोर्स where from where it has been copied, and then the second, yes, ये यहां से कॉपी किया गया है। फिर हम ऐसे ऐसे ये वाला पार्ट जो है ये यहां से कॉपी किया गया है। बेसिकली जो mafioc.com है, यहां से कुछ ये पार्ट कॉपी किया गया है, तो इस सोर्स से ये है। उसके बाद मैं सेकंड सोर्स क्लिक करूंगा तो वहां से ये सारा बता देगा कहां कहां से हमने कॉपी किया है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि आप इसका रिपोर्ट कैसे जनरेट करेंगे। बिल्कुल एंड में जो एक आपका बटन है उसमें डाउन एरो ऑप्शन को जब क्लिक करेंगे तो करंट व्यू आप करेंगे तो ये डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा रिपोर्ट को। और मुझे लगता है आप देख पा रहे हैं एंड तक। मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसमें जो भी कलर टेक्स्ट है, और इसको आप सेव कर सकते हैं डेस्कटॉप पे। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया तो ये एग्जिस्ट करता है, हम इसको रिप्लेस कर देते हैं तो ये डाउनलोड हो गया है। अब इस रिपोर्ट को हम देखेंगे और फिर इसको, इसका प्लेजरिज्म ठीक करने का कि कितना परसेंट है, उसको रिड्यूस कैसे करें, हाउ टू रिड्यूस प्लेजरिज्म। वी विल ट्राई टू लर्न हाउ टू रिड्यूस प्लेजरिज्म और सिमिलरिटी इंडेक्स। यस, अब ये डॉक्यूमेंट है हमने जो प्रोसेस किया था। अब इसको आप देखेंगे, मैंने बताया कि जो जो भी कलर्ड है हम इसको एक बार पूरा देखेंगे। यस, और बिल्कुल लास्ट में जाके आपको ये परसेंटेज बताएगा। यस, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सिमिलरिटी इंडेक्स 10% है और ये सोर्स आपको बताएगा। ये सोर्स इसने अभी ये नहीं बता पा रहा है यहाँ पे, इसने डिटेल में नहीं बताया है, तो एक बार हम दोबारा इसको देख लेते हैं। यहां से भी आप सोर्स परसेंटेज, ये ऑल सोर्स वाला एक बटन होता है जिससे आपको पूरे 1 मिनट प्लीज, सॉफ्टवेयर इज ऑल द वे प्रोसेसिंग। यस, ये वाला इसका पूरा आउटकम है। इसके बॉटम में हम देखेंगे, इसको दोबारा से हम डाउनलोड करेंगे। यस, मैं तो फाइल काफी सारी खुल गई है, बंद कर देता हूँ इनको। यस, ये फाइल हमने दोबारा से खोला है जो रिपोर्ट है। सो ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग में समय लेता है, कुछ मिनट का। यस, दिस इज अनदर पेपर, और इसमें जो परसेंटेज है वो 11% है। यहाँ से आप देख पाएंगे कि 11% इसमें सिमिलरिटी इंडेक्स है। अभी हमने यूजीसी गाइडलाइंस को डिस्कस किया था, तो उसमें लेस देन 10% हम मानते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में होना चाहिए जिसमें कोई पेनल्टी नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको तरीका भी बताया है कि आपको ये वाला सोर्स क्लिक करेंगे तो आपको ये बता भी देगा कि ये वाला सेंटेंस आपने कॉपी किया हुआ है कहीं से। दूसरे वाला क्लिक करेंगे तो ये सेंटेंस वाइज आपको बता देगा कि यहाँ से आपने कॉपी किया है। उसके बाद फुल रिपोर्ट हम इसका डाउनलोड करके देखते हैं।
तो आपको करना क्या है, जितने भी ये कलर्ड टेक्स्ट है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। कई लोग उसको प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो कुछ सिनोनिमस लगा के करते हैं या पैराफ्रेजिंग से करते हैं या उसका वर्ड्स चेंज कर देते हैं। यस, तो ये कलर जितना भी है आपको चेंज करना पड़ेगा। अब कई बार क्या होता है कि जैसे मेरा ही नाम है डॉक्टर कृष्ण की बोरा, इसको भी ये कॉपी में दिखा रहा है तो वो लेस देन 10% में आ जाएगा, इसको तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन बीच में जहां भी आपको कलर ये दिख रहा है, सोर्स का यहाँ पे नंबर होता है 12, जैसे 1 है तो 1 नंबर जो सोर्स है वो यहाँ से आपने लिया है। और सोर्स को कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, वो मैंने बता दिया था। जस्ट click on that particular part and that source will appear like before you. तो ये आपको चेंज करना पड़ेगा and in that way you can reduce your similarity index percentage. अब जैसे numerical value पे ये नहीं दिखा रहा है, ठीक है, तो this is how like we analyze this report and we adopt. yes, अब यहाँ पे इसको देखिए आप ध्यान से, similarity index is 11%, 10% from internet sources, 8% from publication and 4% from student paper. अब इसका जो plagiarism है वो 2%, फर्स्ट जो सोर्स है BAADALSG.inflibnet.ac से लिया गया है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, जो मैंने बताया था साइड में जहां पे हम सॉफ्टवेयर वाले पार्ट में यहाँ पे मैंने बताया था, तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एज इट इज वो बता, जैसे हमारा ये पेपर ये बता रहा है 1% यहाँ से कॉपी है, कृष्ण बोरा कविता झांगरा ये टाइटल है, यहाँ से 1% कॉपी है। तो ये सारा इस तरह से आपको बता देगा सोर्स की आपने कहाँ से टेक्स्ट जो है वो लिया हुआ है, सिमिलरिटी इंडेक्स आपको पूरा बता देगा। तो जैसे ही आप ये टेक्स्ट चेंज करेंगे विच इज ऑल द वे कलर्ड लाइक इन डिफरेंट कलर, सो you would able to reduce this similarity index. उसको फिर आपने दोबारा चेक करना है, दोबारा चेक करने के बाद फिर आपको पता लग जाएगा। कई बार क्या होता है कि आप बार बार चेक करेंगे, बार बार इसको करेक्ट करेंगे तो हो सकता है ये बढ़ भी सकता है कई बार, क्योंकि हो सकता है आप कुछ इसमें एंटर करें जो कि दूसरे किसी सोर्स से मिलता हो, तो ये बाय चांस भी होता है एंड यूर सिमिलरिटी इंडेक्स में इंक्रीज, ये भी हो सकता है। लेकिन ये ज्यादातर केसेस में डिक्रीज ही होता है, तो आप इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। ये आई होप यू आर फॉलोइंग दिस। यस, आई एम ऑडिबल टू यू ऑल आई थिंक। यस सर। तो इसमें इससे रिलेटेड कुछ अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो अभी हम क्योंकि फाइल पे ही काम कर रहे हैं तो आप ऑन द स्पॉट अभी पूछ सकते हैं कि कैसे हमें क्या करना है। कुछ जो चीजें आपको नहीं अभी फॉलो कर पा रहे हैं तो पूछ सकते हैं आप अभी। जी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस प्रोसेस ऑफ जी जी प्लीज। उसके बावजूद भी अगर सोर्स हमारा बढ़ जाता है तो इन दैट केस हमें क्या करना चाहिए? एक मिनट, आप अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे, मैं समझ नहीं पाया क्लियरली क्या पूछना चाहते हैं। अगर हम सिनोनिम्स डाल के उसको चेंज करते हैं जी, और आप खुद भी कह रहे हैं कि अगर डालने से आपका परसेंटेज बढ़ता है, सिमिलरिटी बढ़ जाता है, तो इन दैट केस हमें क्या करना चाहिए? नहीं, उसका तो एक ही तरीका है, जब तक वो परसेंटेज आपका कम नहीं होता है तो आपको चेंज करना है। और वो चेंज करने का जैसे मैंने बताया उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले उसका आप सोर्स देखिए कि सोर्स में क्या लिखा है, तो वो आपको अवॉइड करना है। अगर आप वो अवॉइड करके दूसरा यानी कि सेंटेंस लिखेंगे या डिफरेंट वर्ड्स लिखेंगे तो डेफिनेटली आपका जो परसेंटेज है सिमिलरिटी का वो घटेगा। अगर आप बाई चांस करेंगे, जैसे ये वाला वर्ड है यहाँ पे द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बैंक्स लिखा हुआ है, मैं ऐसे ही बिना सोर्स पे चेक किए इसको लिखता हूं तो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि मेरा ये बढ़ जाए, किसी दूसरे सोर्स से मैच कर जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि सबसे आप पहले आप सोर्स देखें। सोर्स देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका कितना टेक्स्ट वहां से मिलता है और आप उस टेक्स्ट को चेंज करेंगे तो आपका जो सिमिलरिटी इंडेक्स है वो डेफिनेटली घट जाएगा। तो दिस इज द राइट वे टू डील विद दिस प्रॉब्लम। अगर आप बिना सोर्स को देखे करेंगे
तो फिर चांस है कि आपका बढ़ जाएगा, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। लेकिन अगर सोर्स को देख के करेंगे तो डेफिनेटली आप अवॉइड करेंगे उन वर्ड्स को, उन सेंटेंसेस को, तो वो डेफिनेटली घटेगा ही घटेगा। जी, एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू सर। जी, और कोई सवाल? जी, हाँ जी, और कोई? डॉक्टर ज्ञान, एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू सर। कोई और आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज जो बीच में मिस हो गया, या कुछ इस तरह से, अगर आप, या सॉफ्टवेयर के बारे में जो मैंने बताया अभी, इसकी प्रोसेस या रिपोर्ट को एनालिसिस का तरीका, उसके बारे में कुछ अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। जी जी, so I think this is all from my side, and as you are not like reporting for any question, so things are over from my side. सर एक सर क्वेश्चन मेरा है। एक क्वेश्चन है। जी जी जी, प्लीज। हिंदी के लिए भी कोई प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर होता है सर? हिंदी सर लैंग्वेज वाइज कोई डिफरेंस नहीं है, सेम सॉफ्टवेयर है, और वो सभी तरह की लैंग्वेज में डील करते हैं। तो वो क्या है कि आपको सॉफ्टवेयर में लैंग्वेज सिलेक्ट करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर में जब अपना आप डॉक्यूमेंट प्रोसेस करेंगे तो यू हैव टू सेलेक्ट द लैंग्वेज। सो डेफिनेटली अब इसमें एक सवाल और उठ जाता है, कई बार क्या करते हैं हम, इंग्लिश वाले डॉक्यूमेंट से हिंदी में ट्रांसलेट करके कॉपी कर लेते हैं। कोई डॉक्यूमेंट आपने इंग्लिश का पढ़ा और उसको हिंदी में आपने ट्रांसलेट कर लिया, एंड यू वांट टू पब्लिश दैट डॉक्यूमेंट, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्लेजरिज्म की पकड़ में हम आ सकते हैं। इसको अवॉइड करना चाहिए, या उसका कोई प्रॉपर जो भी तरीका है साइटेशन या रेफरेंसिंग का, वो फॉलो करना चाहिए। तो थैंक यू सर। जी जी, एनी अदर सर एक क्वेश्चन? क्वेश्चन जी सर एक क्वेश्चन है। जी जी जी, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। कोई थेसिस से मतलब पेपर लिखना है अपनी थेसिस से, जी, तो उसमें गाइड का नाम जरूरी है सर? गाइड का नाम देना उसमें? सर ये तो आप पे डिपेंड करता है और आपके गाइड पे डिपेंड करता है। इसकी कोई गाइडलाइंस नहीं है। इट इज अप टू यू एंड योर सुपरवाइजर। जी जी जी। उसमें कोई क्लियर कट ऐसी कोई यूजीसी की गाइडलाइंस नहीं है कि जो पीएचडी वर्क है उसमें सुपरवाइजर का, जब पब्लिश कराते हैं सुपरवाइजर का नाम आवश्यक है, ऐसा कोई यूजीसी गाइडलाइंस में नहीं है। जी जी, ठीक है सर, ठीक यू है। एंड योर सुपरवाइजर, वो आपके अपने कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड करेगा सर। जी ठीक है सर, थैंक यू सर। जी जी जी, एनी अदर क्वेश्चन? Another question? Okay. जी डॉक्टर सुमन जी। Then, okay, sir. Okay, I, Somalata, on behalf of Dr. Shefali Nagpal, Director, UGC HRD Center, Bhagat Mahila Vishwavidyalaya, Dr. Bhupender Singh Sir, our course coordinator, and all my dear colleagues, I extend a really hearty vote of thanks to Dr. Krishi Kumar ji. Today we had an opportunity to hear you on academic integrity and plagiarism. Sir, the information shared by you proved to be very beneficial in our research work. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thanks a lot, sir. Thank you all for your patiently listening, and I consider it as a nice opportunity to interact with you all. Thank you very much, and थैंक यू सर। I wish you all a very best for your academic work, for your academic excellence, and for your remaining part of your refresher course. So thank you very much. I end up here. Thank you. Thank you.
यस सर, भूपेंद्र सर नहीं है क्या? भूपेंद्र सर, मैं बात करता हूँ, मैं फोन करूँ एक बार सर से मैं बात कर लूँ। सर भूपेंद्र सर बिजी है, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी। जी सर, विनय सर, कुछ मैसेज है सर की तरफ से? ना ऐसा मैसेज नहीं था, पर सर हम अपने लेवल पे कंक्लूड कर सकते हैं, सर को थैंक्स, वोट ऑफ थैंक्स दे सकते हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं जैसे सर ने बोला कि प्रेजेंटेशन जो पेंडिंग प्रेजेंटेशन है वो तो आज नहीं होंगी डॉक्टर साहब? हाँ सर, वो सुबह उन्होंने एक बार मुझे बोला था कि अगर समय बचेगा तो जैसे हमारे स्पीकर जब ग्रुप लेफ्ट कर देंगे, या मतलब फिर वो उनको इवेल्युएट कौन करेगा, ये वाला एक सवाल है सर। जी, तो इसका मतलब है सेशन फिनिश है। एक बार डॉक्टर भूपेंद्र सर को कॉल करके देखूं या रहने दूं? हाँ सर, एक बार आप उनसे एक बार पूछ लीजिए सर, एक बार कॉल कर लेता हूं। सर। हमको आइडिया है हमारे कितने साथी अभी रह रहे होंगे प्रेजेंटेशन से? जो लिस्ट मैंने प्रिपेयर किया लगभग 7-8 लोग हैं लिस्ट के अकॉर्डिंग। अब उसमें से कितने पार्टिसिपेंट एक्चुअली हैं, तो 7-8 के आसपास है, 7, 8, 9 के अराउंड है डॉक्टर साहब। सर मेरे हिसाब से तो इसको आज निपटा लेना चाहिए सर फिर हम लोगों को ना, क्योंकि बहुत ये मैंडेटरी है सर इवैल्यूएशन इसका सर्टिफिकेट के लिए। आपकी आवाज सर नहीं आ पा रही ज्ञान सर मुझे। ठीक है सर, ओके, ठीक है। हाँ जी डॉक्टर विनय सेठी जी। जी सर। सर बोल रहे हैं कल देख लेंगे, बाकी सभी के लिए मैसेज है, सभी टीचर्स जो भी जिनकी भी प्रेजेंटेशन पेंडिंग है। डॉक्टर रेणुका दास की तो पेंडिंग है, उन्होंने मेरे को बताया भी था। कोई और भी टीचर हैं तो प्लीज डॉक्टर भूपेंद्र सर को मैसेज छोड़ दें उनके व्हाट्सएप नंबर पे, और कल को मॉर्निंग में प्रेजेंटेशन होंगी, जैसे ही हमारे साथ कल को रिसोर्स पर्सन होंगे। तो अब कंक्लूडेड है, अब यहाँ पे आज का सेशन फिनिश है, सभी टीचर्स के लिए ये मैसेज है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir. everyone. थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू ज्ञान सर। थैंक यू डॉक्टर अमर सिंह जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक्चुअली लिस्ट के अकॉर्डिंग तो 5-7 पेंडिंग दिखा रहे हैं, लेकिन सर ये कह रहे हैं शायद हो सकता है इनमें से पार्टिसिपेंट हो ही नहीं। मुझे लगता है डॉक्टर रेणुका दास, या हो सकता है कोई एक और हो, बस 1-2 पेंडिंग है डॉक्टर साहब। ओके कल सुबह 10 बजे एक बार सुबह कर लेंगे। राइट डॉक्टर साहब सुबह करेंगे, बिल्कुल जी सर जी। ओके सर, ओके। तोमर साहब नमस्कार। हेलो, नमस्कार। कल मिलते हैं सर। हाँ कल मेरे ख्याल में 1-2 होगा, अगर नहीं बाकी सब लोगों की शायद होगी प्रेजेंटेशन। हाँ सुबह हो जाएंगे 10 मिनट में 5। हाँ क्योंकि ज्यादातर लोगों की देखा तो होगी है। ठीक है तो है डॉक्टर साहब, ओके सर, मिलते हैं कल सुबह।